Hello and welcome to learning session number 11, which hopefully will be our last learning session for chapter 3, which is life processes in living organisms part 2. Okay, so let us quickly revise the entire chapter. Okay, I'm not going to tell you all what all we have seen. I want you all to think. Can you remember things when I say these topics ka naam? Okay, for example, asexual reproduction. So we had seen in unicellular organisms and we had seen in multicellular organisms. Can you recall the names of all the types of asexual reproduction in unicellular organisms? There were three types. Can you recall their names? Can you recall what is the process like? Can you recall the diagrams? Just check. And if you cannot recall, go back to your textbook, go back to your notes and just check and just go through everything once more. Then we had seen asexual reproduction in multicellular organisms. So again, there were another five types. So can you remember the names of those five types? Can you remember the process of each and every type? Can you remember the diagram of each and every type? Just check. Can you recall all of this? And if you cannot recall, open your textbook, revise everything right now. Next, we had seen asexual reproduction in plants. So do you remember the diagram of the flower? Do you remember the various parts in that diagram of flower? Can you label them? Then we had seen sexual reproduction in human beings. Again, there were two important diagrams in this part: the human male reproductive system and female reproductive system. Do you remember the diagrams? Can you all draw the diagrams right now without seeing in your notebooks? And if you can draw the diagram, can you label those diagrams without seeing? If not, again, open your textbooks, pause the video here, open the textbook, and revise that one time before we actually end this learning session. Next, menstrual cycle. Menstrual cycle, you cannot by heart the answer. I'm telling you right now. वो answer by heart in yoga unless and until you by heart the diagram. Once you by heart the diagram, looking at the diagram, you can explain the entire answer. So focus on by hearting the menstrual cycle diagram first. Can you remember the definition of menstrual cycle? Do you remember the various hormones that will be secreted during menstrual cycle, etc.? Okay, so all these things you all should know, and especially the diagrams. These four diagrams are very important: human male reproductive system, human female reproductive system, flower, and menstrual cycle. Okay. Next, reproduction and modern technology. There are three modern technologies. Do you remember the names of all three? Do you remember the process of all three modern modern techniques used in reproduction for couples who cannot have babies? How are twins formed? And what are the two types of twins? Can you remember the names of the two types of twins? What is the different process? उसमें भी दो अलग-अलग diagram बताए थे मैंने. Can you remember those diagrams? If not, pause the video here and quickly go through uh, the twins section in your textbook. Reproductive health. What all steps are necessary to take care of your reproductive health? Can you list down 3 to 4 steps? Family planning. What is the meaning of family planning? Why is family planning important? What are the various ways in which you all can do family planning? Can you list out the things you all can do for family planning? Just check if you can remember. If not, I've given you answers to both these topics. Okay, reproductive health as well as family planning. मैंने तुम लोग को answers लिख के दिए, so it should be in your notebook. If you cannot remember that, go through them again and quickly revise them. The reason I'm telling you this is, if, say, for example, when you come at the end of the learning session and you don't remember what we studied in asexual reproduction, then why are you studying in the first place? Because your board exam is going to happen after 6-7 months, right? So you need to remember all these things till 6-7 months. So you have to keep revising them again and again. You have to really try hard to memorize things. सिर्फ समझ के सिर्फ understanding से you're not going to pass the board examination. If you want to score very good marks, you have to buy hard things. It's very sad that you have to buy hard things. It's not that great, but what you have to do, you have to do. There's no other option. So make sure you're by hearting things. Okay, only if you start by hearting, then only there are chances that you will score good in your board examination. So please start by hearting things, by hearting whatever you all are studying, and keep practicing whatever you all are practicing in mathematics. Okay, we're going to move ahead. So I've finished everything in this chapter. Okay, concept wise everything has been finished. Only we're going to discuss a few remaining end of chapter questions in this chapter today. Okay, so this is the first question. Again, I won't directly give you all the answer. Try to write the answer by yourself. I'll wait for 5 minutes.
All this is, I think, on page number 35 of your textbook. If you want to see the questions from your textbook, I'm going to wait for 5 seconds. Try to write the answer by yourself. Maybe if you want, you can just try to write the answer in your textbook itself with pencil. But try to write the answer by yourself. Okay. And don't just think about the answer. Write it down. Only when you write it down, you will see the mistakes you're making, and then only you will be able to improve on them. So I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you are done writing the answer to this question in your notebook or in your textbook. Now let us see the answer. Okay. So basically, it differentiate between asexual reproduction and sexual reproduction. They have given you a few points. The opposite thing you have to write for the other side. Okay. So first one, what they had given was reproduction that occurs with the help of somatic cells. Do you remember what is the meaning of somatic cells? इसका meaning लिख के दिया था मैंने. The meaning of somatic cells is any cell in the body which is not a reproductive cell. Okay, any cell inside the body which is not a reproductive cell is somatic cell. So reproduction that occurs with the help of somatic cells is called as asexual. तो यहाँ पे अगर somatic cells use कर हो रहे हैं तो asexual में क्या use होंगे? Sexual में they'll be reproduction will happen using two germ cells. Okay, or gametes. गैमेट्स भी बोल सकते हो, जर्म सेल्स भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हो. ऑल ऑफ देम मीन द सेम. ओके, सो यहाँ पे अगर सोमैटिक सेल्स हो रहा है तो यहाँ पे जर्म सेल से हो रहा है. नेक्स्ट दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं चाहिए, आइदर मेल और वन फीमेल. ओके, दे हैव रिटन दिस इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब वन, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, तो एक ही पेरेंट की जरूरत है रिप्रोडक्शन में. दस both male and female parents are not necessary. यहाँ पे male and female parents are necessary, यहाँ पे not necessary. That's the difference. Next, asexual reproduction में they had given this reproduction occurs with the help of mitosis only, whereas we have seen in sexual reproduction both mitosis and meiosis type of cell division occurs. Okay, so you have to write both, not just meiosis. Mitosis and meiosis दोनों होते हैं sexual reproduction में. नेक्स्ट सेक्शन में दिया था न्यू इंडिविजुअल इज फाउंड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स. डिफरेंट यानी बहुत अलग नहीं होंगे, बट थोड़े चेंजेस होंगे. ओके, वी डोंट लुक द एग्जैक्टली सेम एज आवर पेरेंट्स, राइट? आवर स्किन कलर इज नॉट एग्जैक्टली एज सेम एज आवर पेरेंट्स, सो थोड़ा अलग होता है. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. whereas in asexual reproduction they will be genetically identical. Okay, they will be exactly same genetically. Last, asexual reproduction के अलग अलग मेथड्स दिए है. बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एटसेट्रा. राइट, ये सब अलग अलग मेथड्स हम लोग ने देखे हैं. वेरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही चीज होंगे जो बार बार होंगे. वन इज गैमेट फॉर्मेशन, यानी वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो फॉर्म होंगे, एंड वो जब साथ में आएंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. So all individuals in the reproductive cell will occur using gamete formation and fertilization. ये common steps होंगे sexual reproduction में. Whereas asexual reproduction में बहुत सारे variety है, बहुत सारे अलग अलग methods है. Okay, so make sure you are copying this and just check तुम लोग ने जो आंसर लिखा है और जो actual आंसर यहाँ पे दिया, what was the difference between that? Where did you go wrong and how can you improve next time? Make that keep those learnings in your mind. Keep learning कहाँ पे mistake हो रहा है और कैसे you can improve. Okay. So next, again, there's a question given on your page number 35. Fill in the blanks. Quickly take how much ever time you need. I'm going to wait for 5 seconds. I want you to first try to answer them all by yourself without taking the help of the textbook. But if you need, if you cannot write the answer, then take the help of the textbook and write the answers to all these questions. Okay, I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope you all have found at least 4 or 5 answers till now. Okay, textbooks, and this is a very important skill to learn. Okay, because for you, your Bible is your textbook. जो कुछ भी एग्जाम में आने वाला है सब कुछ तुम्हारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नो टेक्स्ट बुक में कहाँ पे क्या दिया है. It's very important you all read the entire textbook 2 to 3 times at least before the board examination. So अभी से आदत लगा दो, तुम लोग टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो. When you say, for example, when you read इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो बोल दिया तो यू शुड नो कि अच्छा इस पेज पे इसके बारे में आंसर मिल जाएगा. दैट्स द लेवल ऑफ मेमोराइजेशन दैट यू नीड to crack the board exam with very good marks. Okay, but textbook reading is very important. Okay, so I hope you all have found at least 4 or 5 answers. Just quickly cross check whether you have got your answers right or not. सारे answers मैंने red में लिखे हैं. Okay, there's one question mark over here, and the reason is I could not find the answer in your textbook. Okay, and to be honest, I don't know the answer to that question. Okay, so I'm giving you all this challenge, I'm giving you all this
challenge to try and find the answer to the third fill in the blank. In male and female reproductive system of human, which gland is same? I'm giving you this challenge to actually find this answer. If you really find this answer, try to comment down in the comment section of YouTube itself. YouTube में comment कर दो. Okay. Okay. So just check your answers and we'll move ahead. Whichever is wrong, again, make that connection कि कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, and how will you improve? How will you make sure next time ये गलती नहीं होगी? Okay. Take that learning with you as we move on to the next slide. Next. Again, a question given on page number 35, I think. End of chapter question. Complete the paragraph. तो यहाँ पे brackets में you all have been given options. Okay. बस ये bracket में जो जो options दिए वो तुम्हें blanks में fill करते जाना है. Okay. So I'm going to wait for again 5 seconds. Try to write the answer. If you have understood menstrual cycle very well, you don't even have to go back to a textbook. तुम लोग को अपने आप से आंसर आ जाना चाहिए. और मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो जो डायग्राम है वो अच्छे से बाय हार्ट हो गया और अच्छे से समझ लिया है तो ओके. बट अगेन इफ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ या फिर याद नहीं आंसर, टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक. ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds. Okay, I hope you all have found all the answers. Again, quickly what we are going to do is you are going to check the answers. Okay, so जो कुछ भी बोल्ड में दिया those are your answers. First blank का आंसर था follicle stimulating hormone. Second का है endometrium of uterus. Next is luteinizing hormone. फिर corpus luteum. Then progesterone and estrogen. And lastly endometrium. So just check your answers. If you all want, you all can pause the video and check your answers whichever you all have written. I'm not explaining because मैंने ये पूरा काफी डिटेल में previous video में explain कर चुका हूँ already. Okay, so quickly check your answers. Okay, we're going to move ahead. Make sure you all are copying this. Okay, either in your textbook, pencil से, or in your notebooks. Okay, next. Gender of a child is determined by male partner of couple. Explain with reasons whether this statement is true or false. So ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. अभी 2019 मार्च में यानी पिछले साल के एग्जाम में इसको कैसे ट्विस्ट करके पूछा, देखो. इट्स द सेम क्वेश्चन बट वो लोग ने टेक्स्ट बुक की भाषा यूज नहीं किया. दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट लैंग्वेज. इट्स स्लाइटली ट्विस्टेड. दे हैव सेम स्टेटमेंट दे दिया. जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ द कपल. ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबाउट स्टेटमेंट. तो डायग्राम ड्रॉ करने बोल दिया था. वैसे एंड ऑफ चैप्टर में कोई डायग्राम का जिक्र नहीं है, बस ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, या ट्रू है तो क्यों ट्रू है, बस इतना बताना है. सो दिस इज हाउ द बोर्ड एग्जाम इज ट्राइंग टू चेंज एंड ट्विस्ट द क्वेश्चंस सो दैट दे आर आस्किंग द सेम थिंग डिफरेंटली. दैट आल्सो यू नीड टू लर्न कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा, मे बी यू नो द आंसर बट यू कैन नॉट मेक दैट कनेक्शन बिटवीन ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखना था. ओके, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न. Okay, so again you'll know the answer. I'm going to wait again for 5 seconds. Try to write the answer by yourself. Okay, when I see your notes I should be able to see that cancellation जो तुम लोग ने खुद से लिखा है, और addition तुम लोग ने पूरा सही लिखा था बट एक दो पॉइंट्स तुम लोग ने ऐड कर लिया. Okay, I should be able to see that in your notes. Okay, I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope you all have paused the video and written a good answer. It's a 2-mark question, so it should have at least 4 points, but again there's a diagram, so maybe 2 points में भी तुम लोग ये आंसर लिख सकते हो. It's up to you. So let us see the answer. Okay, so ये डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है. Okay, so यही डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना था. And before knowing this, what you all should know is हमारे humans में there are total 46 chromosomes. Humans have 46 chromosomes. Okay, या फिर 23 pairs मतलब दो. Okay, so 23 का डबल क्या होता है 46. So 46 chromosomes होते हैं, उसमें से 44 not 44, give me a minute, ऑटोसोम्स होते हैं, राइट. 44, लेकिन इट्स नॉट रिटन हियर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा है, 9th स्टैंडर्ड में भी इट स्टडी. इसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनका कोई संबंध नहीं है. एंड वन इज अ सेक्सुअल क्रोमोसोम. ओके, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर सेक्स, तुम्हारा जेंडर क्या. सो अभी अगर वो जो लास्ट के दो बच जाते क्रोमोसोम्स 45th एंड 46th, अगर वो दोनों एक्स होंगे देन इट इज अ girl. Okay, the sex is girl. And if one is x and one is y, then it is a boy. Okay, that you all should know beforehand, जो हम लोग ने already 9th standard में पढ़ा. So gender of a child is determined by male is true. Okay, this is true. The given statement is true. यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दिया. The gender of child is determined by
मेल पार्टनर ऑफ द कपल, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, तो ये जो ट्रू यहाँ पे होना चाहिए था, इसके बाद वो यहाँ पे चला गया मेल के बाद, सो जस्ट मेक दैट करेक्शन, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, सो ये ट्रू जो है यहाँ पे कट करके यहाँ इसके बाद लगा दो, ये ट्रू है। एंड व्हाई इज दिस ट्रू, अगेन वी हैव सीन इन डिटेल इन आवर during our previous learning session. Okay, I'll quickly explain. In human males there are 23 pairs of chromosomes, या तो 46 chromosomes बोल सकते हैं या फिर 23 pair बोल सकते हैं, 23 यानी डबल, 23 का डबल 46। it contains two dissimilar chromosomes, तो जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें से दो क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे, डिसिमिलर यानी अलग अलग। ओके, एक होगा एक्स क्रोमोसोम और एक होगा वाई क्रोमोसोम। इन फीमेल्स 23 पेयर कंटेन्स टू एक्स क्रोमोसोम्स, तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव सीन हियर राइट, दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो गर्ल चाइल्ड होगा। ऑल चिल्ड्रन इनहेरिट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, सो मदर के पास से तो एक्स ही आएगा राइट, बिकॉज फीमेल्स ओनली हैव एक्स क्रोमोसोम्स, सो मदर से एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, whereas the other chromosome is inherited by the father. So the father has an X chromosome as and a Y chromosome. It depends कि ये वाला गैमेट फॉर्म कर रहा है या ये वाला गैमेट फॉर्म कर रहा है, या फिर ये वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेने वाला है या फिर ये दूसरा वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेने वाला है। इट डिपेंड्स ऑन द फादर राइट। इफ द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय द फादर इज एक्स, तो एक एक्स तो ऑलरेडी आ गया और दूसरा एक्स जो फादर से है वो भी एक्स आ गया, देन इट्स अ गर्ल चाइल्ड। एंड then it will be a girl if it is Y, the chromosome inherited by the father, समझो फादर से Y आ गया और मदर से तो X ही आना है, so एक Y और एक X यानी बॉय हो गया। okay, then it will be a boy. So that's why this statement is true that gender of a child is determined by the male partner. Why? Because मेल्स के पास ये एक X होता है एक Y होता है, so X लेगा तो गर्ल हो जाएगा, Y लेगा पार्ट फर्टिलाइजेशन में तो बॉय हो जाएगा। okay, so that's your answer to that question. Let's move it again. Check your answers. If you have written your answers, check your answers. तुम्हारे क्या reasons थे, तुमने ये डायग्राम ड्रॉ किया क्या, अगर तुमने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो क्यों नहीं किया, डिड यू गो टू द टेक्स्ट बुक, डिड यू फाइंड दिस, ये टॉपिक कहाँ पे दिया टेक्स्ट बुक में, डिड यू एक्चुअली ट्राई टू फाइंड इट इन द टेक्स्ट बुक, if you did not find it, why did you not find it, were you able to write the answer in 4 points properly, just check तुम लोग ने कहाँ पे गलती किया and how can you improve that answer, take that learning with you as we move on to the next question. Okay, next, in case of sexual reproduction, newborn show similarities about characters. Explain the statement with suitable examples. तो sexual reproduction में जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा, नया इंडिविजुअल बॉर्न होगा, वो थोड़े सिमिलैरिटीज दिखाएंगे अपने पेरेंट्स से, इसको एक्सप्लेन करना। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, कौन से डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं, हाउ डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मदर एंड फादर गेट ट्रांसमिटेड इन अ ह्यूमन एम्ब्रियो, मदर एंड फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन एम्ब्रियो में कैसे ट्रांसफर होते हैं, दैट्स अगेन सेम आंसर बट द क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट। तो कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं वो लोग और सेम चीज को अलग अलग तरीके से वो लोग पूछ रहे हैं, यू ऑल शुड हैव दैट स्किल टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये दोनों क्वेश्चंस अलग है बट दोनों के आंसर सेम होने वाले हैं, you will need to develop that skill. Okay, and that skill will only come if you read the textbook very thoroughly और तुम्हारे reasonings और concepts काफी clear है। Okay, so again wait, I'm going to wait for 5 seconds, try to write the answer by yourself. Again I'm saying do not think about the answer. बहुत बार हम लोग को लगता है अच्छा मैं पॉज करके सोच लूंगा आंसर को या सोच लूंगी आंसर को एंड देन आई विल चेक कि अच्छा मैंने जो आंसर सोचा था और जो एक्चुअल में भैया ने बताया उसमें क्या डिफरेंस है, एंड आई लर्न, बट उससे ज्यादा लर्निंग नहीं होगी unless and until you write it, you won't actually feel where you have made a mistake. Okay, so make sure you're writing the answer. Okay, okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and have an answer ready with at least 2 points in them. Okay, so let us see the answer. So it's a 3-point answer. Okay, sexual reproduction involves two parents, that is male and female parent. दो parents होते हैं sexual reproduction में. Next point, the male gamete coming from male parent fuses with the female gamete of female parent to form the zygote. Okay, this process is called as fertilization, right? So zygote कैसे form हो रहा है, male gamete से जो male parent से आ रहा है, female gamete से जो female parent से आ रहा है, which develops into an embryo and then into a new individual. So मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट विल गिव यू जाइगोट, जाइगोट विल गिव यू एम्ब्रियो। हम लोग ने एक फ्लो चार्ट कॉपी किया था राइट, इट्स द सेम फ्लो चार्ट जिसको एक पॉइंट में लिखा है। ओके, एंड द एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट, thus the new individual always has recombined genes of both parents, क्योंकि मेल गैमेट भी आया था फीमेल गैमेट भी आया था, सो जो एम्ब्रियो उसके पास कंबाइंड जीन्स होंगे मेल पेरेंट के और फीमेल पेरेंट के। ओके,
फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड शोज रिजेम्बलेंस यानी कुछ सिमिलैरिटी, ओके, with his or her parents with respect to eye color, hair color, height, etc. So शायद उनकी हाइट काफी सिमिलर है टू द पेरेंट्स, और आंखों का कलर काफी सिमिलर है टू देयर पेरेंट्स, हेयर का कलर काफी सिमिलर है टू देयर पेरेंट्स. All this is happening because the new individual has combined needs of both the mother and the father. That's why this is happening. Okay. Hence again they are repeating the question. Hence in the case of sexual reproduction, newborn shows similarity between characters. Question को वापस लिख दिया पहले hence लगा के. Okay, at the end of the answer you write the conclusion this way. Okay, again check what is your answer that you have written, what is the answer that I have given, and how can you enhance your answer, where did you go wrong, which points you need to add to make your answer more strong. Okay, take that learning with you, and then let's move on to the next question. Okay, modern techniques like surrogate mother, sperm bank and IVF. IVF का full form क्या है? In vitro fertilization. In vitro का मतलब in test tube. Okay. So modern techniques like surrogate mother, sperm bank and IVF technique will help human beings justify the statement. यानी ये statement सच क्यों है, इसके लिए reasons देने. Okay. So this is a very big answer. Okay. This will be asked, most likely be asked for 4 or 5 marks. So 4 or 5 marks के लिए you should be able to write at least 7-8 points minimum. Okay, and with very good explanation. So again, I'm going to wait for 5 seconds for you all to write your own answers. You've already understood the entire concept very well of all the 3 techniques. I'm going to wait for 5 seconds for you all to make an answer out of it. Okay. Okay, I hope you all have paused the answer and you have at least 6-7 points का एक अच्छा well-formed answer. Okay. Now let us see the answer. This is only the half of the answer. Okay. And again, ये जो second point है काफी बड़ा दिख रहा है. You all can break it into 2 or 3 more points. Okay. It's up to you. तुम लोग एक point कैसे बनाते हो? If I were here, I was writing this answer. मैं जो second point है उसको at least 2 या 3 points में divide कर लेता, just so that it looks very easy to read. So first point, it's an introduction point. Okay, childless couples can have a child with the help of advanced medical techniques like surrogacy, sperm bank and IVF. क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दिया, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पॉइंट है. यहाँ पे एक्चुअली में मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. नेक्स्ट, विमेन हैविंग प्रॉब्लम्स विद इम्प्लांटेशन. तो मेरा सेकंड पॉइंट किसके बारे में, जिन विमेन का इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? व्हेन द एम्ब्रियो फॉर्म्स, वो यूट्रस में जाके चिपक जाना चाहिए, उस चिपकने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, जिनका इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम है इन द यूट्रस can have a child with the help of surrogacy technique. Okay, उनके लिए surrogacy technique is correct. In this technique, then they are explaining what is happening in surrogacy technique. In this technique, oocyte is collected from the concerned woman, जिसको भी वो implantation का problem हो रहा है यूट्रस में, उसका oocyte ले लेंगे and fertilized in a test tube with the help of sperms collected from her husband. So the couple का जो male partner होगा, they will collect the sperms from him. They will take out the oocyte from this woman who has problem of implantation, and they will fertilize it in another woman. Okay, उसको फर्टिलाइज करके दे विल इम्प्लांट दिस, क्योंकि सेम वुमेन में इम्प्लांट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसके यूट्रस में इम्प्लांटेशन का ही प्रॉब्लम है. तो दे विल इम्प्लांट दिस इन सम अदर वुमन एंड दैट वुमन इज कॉल्ड एज द सरोगेट मदर, एंड दिस सरोगेट मदर विल हैव अ नॉर्मल यूट्रस. ओके, सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 2, सरोगेसी के बारे में पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट, sperm bank. Second point is about sperm banks. So in sperm banks, semen is collected from sperm donors after their physical and medical checkup is stored. Okay, एक बार जो जिसको भी डोनेट करने अपने स्पर्म्स, उसका फिजिकल और मेडिकल चेकअप होने के बाद उनका सीमन विल बी collected in sperm banks. Okay, semen sample from sperm bank is used to fertilize the oocyte of the female partner of the concerned couple. So if there's a couple जिसके male partner में problem है, okay, the sperm count is not that great, for example, if that is the problem, so उस couple का male partner में अगर कोई problem है, then they can take the sperms from the sperm bank and then fertilize this couple के women को. Okay, the resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. वो जो couple है, उस couple के women के uterus में ही they will implant that zygote which is formed, okay, or embryo which is formed. Couples in which males have problems like sperm production can have child with the help of this technique. तो ये technique किसके लिए, जिनका male partner में problem होगा, for example sperm production का problem है.
Last point will obviously be about जो third technique रह गया IVF. Okay, so childless couples having problems like sperm count, obstacles in oviduct, etc. ये जो problems जिन couples को होगा, they can use IVF technique. Okay, in this technique, fertilization is brought about in test tube and embryo is implanted in the woman's uterus at appropriate time. So अगर ओविडक्ट में कुछ ब्लॉकेज आ रहा है या फिर स्पर्म प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, then they will take the sperms, take the oocyte, they will fertilize it in a test tube, then that embryo will be implanted, they will make it stick to the uterus of the woman at appropriate time, correct time पे in the menstrual cycle they will implant it. Okay, so that उसको सब nutritions वगैरह मिल जाएगा and a baby is formed. So that's your answer to that question. Okay, so that was the last question. So that's it. We have come to the end of this learning session and we have come to the end of this chapter. I hope you all learned this chapter very well. I hope you all understood the chapter very well. And it's an important chapter both from board's point of view and it is also important from a life point of view, because you will use all this knowledge in your life. If you know this chapter very well, you will be able to take very informed decisions about your body. Okay, and it's very important to know your body very well. So it's a very important chapter from board's point of view obviously and also from your life's point of view. इसमें से बहुत सारी चीजें you're going to use in your lifetime, throughout your lifetime, and you'll be even able to guide others if you know the knowledge very well. Okay, so it's a very important chapter. I hope you all also enjoyed learning this chapter. So that's it for this learning session, and I hope you all will see me in the next chapter of science. See you guys. Bye. Peace.